friends, myself Vijay Pratap Singh. Today we are going to discuss about sources of business finance. This is a chapter 2nd, 7th, part B, finance and trade. We will discuss about these things and it should be very important part of our finance and trade. We have to discuss sources of business and finance in this chapter. So in this chapter, information is given in front of you, concept is given. So now we have to discuss about concept of business finance. It is a very important part. Before that, I had told you about the business, and now we are going to discuss about the business finance. Business finance refers to capital fund and credit fund invested in the business. Once again listen. Business finance refers to capital funds and credit funds invested in the business. In business, we are investing capital fund or credit fund. Financing means making money available when it is needed. When money is important, when money is needed, these types of things we are providing with the help of business finance. Once again listen, business finance refers to capital fund and credit fund invested in the business. Financing means making money available when it is needed. Next one, business finance may be defined as planning, raising, maintaining, and controlling all the money used or capital fund of any kind used in connected with business. This is the concept of business finance. Once again listen. Business finance may be defined as planning, raising, managing and controlling all the money used or capital fund of any kind used in connection of business. This is the concept of business finance. Now next thing is given in front of you, definition of finance by different authors. According to different authors, we have to discuss today what is the concept of business finance. The first one is given in front of you about B.O. Wheelers. According to B.O. Wheelers, what we had explained, now we are going to discuss. Finance is that business activity. Finance is that business activity which is concerned with the accumulation of conservation of capital fund in meeting the financial need and overall objectives of business enterprises. According to that, B.O. Wheels had explained, we are doing finance in the business activities. Finance is the business activity which is concerned with the help of capital fund. And capital fund in the meeting in the financial need and overall objectives of the business enterprises. That's why we need business finance. Another one is given in front of you, Howard and Upton. Howard and Upton, according to that, we have to discuss what is the meaning of and what is the concept of business finance. So, business finance involves a set of administrative function in an organization which related with the arrangement of cash and credit,
so that the organization may have to means to carry out its objective as statutory of possible. These are things satisfactorily means satisfaction we are getting with the help of this possibility. So Howard and Upton had explained that these are the things we are getting definition of finance by the different authors. With the help of that we can able to learn, and we have to make a short note according to these things. Now nature and significance we are going to discuss. Nature and significance of business finance. So dear students, you have to listen very silently. This is the first information what I am explaining from the chapter 7 part B, finance and trade. Sources of business finance. Nature and significance of business finance we are going to discuss now. One can start a business or run an enterprise without adequate funds. Every businessman requires some money to start, which is called initial capital. Once again listen, no one can start business or run an enterprise without adequate fund. हम कोई भी व्यवसाय बिना पैसे के नहीं चला सकते, ना रन कर सकते, ना इस्टेब्लिश कर सकते हैं. एवरी बिजनेसमैन रिक्वायर्स सम मनी टू स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ इनिशियल कैपिटल. सारे बिजनेसमैन को आवश्यकता है कि वो कुछ पैसे लगाए फिर अपने बिजनेस को स्टार्ट करे. इट्स कॉल्ड इनिशियल कैपिटल. द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस. और ये कैपिटल हमारा कितना बड़ा या कितना छोटा होना चाहिए, ये हमारे व्यवसाय के साइज के ऊपर है. अगर हमारा व्यवसाय छोटा है तो हमें छोटे पूंजी की आवश्यकता है. अगर हमारा व्यवसाय बड़ा है तो हमें बड़े व्यवसाय की पैसे की आवश्यकता है. ठीक है. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द बिजनेस इंटरप्राइजेज रिक्वायर्स कैपिटल एंड फाइनेंस फॉर द फॉलोइंग पर्पस. यहाँ आपको बताया जा रहा है कि अगर हमें कैपिटल रिक्वायर होता है, आवश्यकता होता है, तो उसके क्या क्या पर्पस हो सकते हैं, उद्देश्य. तो आपको यहाँ 7 टॉपिक बताए जाएंगे. ये 7 तो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. ये आपको नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस के अंतर्गत ही बताए जाएंगे, जो बहुत ज़रूरी है आपको जानना. इसमें आप जान लें. पहला है, while starting a business, finance is required to processor fixed assets and also for meeting day-to-day expenses. हमें पूंजी की आवश्यकता है व्यवसाय स्टार्ट करते ही, और हमें रोज़ के दिन में जो खर्चे हैं, बिजनेस में जो लागत लगाई जाती है, वो पूंजी से ही हो सकती है. To meet the working capital requirement when the production process is lengthy. This is second. Third one is given in front of you. The finance and growth and expansion projects of the company, we need fixed capital. We need fixed capital. According to that, adequate finance provide the following benefit to the business concern. According to that, 7 topics are coming in front of you. First one is the firm can meet its liabilities on time. Once again listen, the firm can meet its liabilities on time. Second one, the firm can carry on the business smoothly. Second topic. Third one, the firm can adopt latest technology and few innovative method of production. Fourth one is given in front of you. The firm can make use of its business opportunities. And fifth one is given in front of you. The firm can face competition more strongly. Sixth one, the firm can replace its assets and machinery whenever necessary. Seventh one, the firm can face reasons and
depreciation period in a trade cycle. So now we had read here few topics about फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस। अगर हमारे व्यवसाय में पैसा है तो हमारा व्यवसाय बहुत अच्छे तरीके से चलेगा, अगर हमारे व्यवसाय में पैसा नहीं है तो हमारा व्यवसाय अच्छे तरीके से नहीं चलेगा। द लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स वी विल फेस एंड वी कांट एबल टू रन आवर बिजनेस। हमें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और हम अपने व्यवसाय और बिजनेस को अच्छे से नहीं चला पाएंगे। इसलिए आपको कुछ टॉपिक्स यहाँ बताए गए हैं, जैसे हमारा लायबिलिटी समय समय के अनुसार बढ़ता है। अगर हमारे पास पैसे हैं तो हमारा बिजनेस तभी अच्छे से चलेगा जब हमारे पास पैसे हैं। हमारा फर्म में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, प्रोडक्शन तभी बनेगा, नए नए प्रोडक्शन तभी आएंगे जब हमारे पास पूंजी हो, फाइनेंशियल सपोर्ट हो। अगला हम ये कह सकते हैं हमारे बिजनेस को तभी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, मौके तभी मिलेंगे जब हमारे पास फाइनेंशियल सपोर्ट होगा, मतलब हमारे पास जब पैसे होंगे। फर्म हमारा कंपटीशन में तभी स्ट्रांगली खड़ा हो सकता है जब हमारे पास पूंजी हो। मीन्स आवर फर्म कैन एबल टू मेक अपॉर्चुनिटी स्ट्रांगली, मीन्स द फर्म कैन फेस कंपटीशन मोर स्ट्रांगली। हमारा फर्म कंपटीशन में तभी स्ट्रांगली खड़ा हो पाएगा जब हमारे पास पैसे होंगे। अगला आपको मैंने बताया था कि हम मशीनरी तभी भी समय समय से बदल पाएंगे, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस समय समय से तभी कर पाएंगे जब हमारे पास पर्याप्त धन हो। हमारे पास एसेट्स तभी आएंगे, मशीनरीज तभी आएंगी जब हमारे पास आवश्यकता हो, जब हमारे पास पूंजी होगी। पूंजी कहाँ से आएगा? फाइनेंस से या हमारे पास खुद की पैसे से। अगला बताया गया आपको द फर्म कैन फेस दिस टाइप्स ऑफ डिप्रिसिएशन ट्रेड साइकिल टाइम टू टाइम। हमें व्यवसाय में डिप्रिसिएशन समय समय पे होता है, जिससे हमारा घाटा, नुकसान, फ़ायदा होता जाता है। ये सारी चीज़ों को हम बिजनेस इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं और जानते हैं। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड व्हाट आई हैड एक्सप्लेन दिस इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 7 सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। So now this is the information about the introduction what I had explained. This is the information of business finance. This is a concept and nature and significance I had told you today. About the more information you have to join per day online classes, and per day you have to see this all videos and lectures. Now dear students, thank you for this. Once again we will meet tomorrow, and now thank you all for listening my video. Thank you.